Welcome to all my dear students. So now we will discuss the second part of the first unit, that is solid state. On this lecture we will discuss the crystal lattices and unit cells. So in our last lecture we have discussed that that is a difference between crystalline solid and amorphous solids and the types of crystalline solids. Now we will discuss the crystal lattice and unit cells. Our topic is crystal lattice, crystal lattice, crystal lattice and unit cell. See, first I want to make you understand what is crystal lattice. First मु तुमको बुझिया पे चेष्टा करबे, then मु तार डेफिनेशन टा कहबे. देखो पहले crystal lattice means गुटे space lattice, गुटे particular arrangement of constituent particles. आमे कहि परिया गुटे solid रे एटा होची गुटे solid, एटा होची गुटे solid. एई solid रे को solid ना crystalline solid. एटा होची crystalline solid. एई crystalline solid रे well arrangement थाए. Well arrangement the particle size particles बहुत भल से arrangement ही थाते. केमितिया टाइप arrangement ही थाते ना एक particle repetitive way arrangement ही थाते. तो एमान भीतर किछि repetitive थाए. तो repetitive patterns थाए. जो माने जो जब ए repetitive pattern केमिति थांती ना by joining their constituent atoms or constituent particles. That constituent particles may be these constituent particles may be that is constituent particles. It may be atom or molecule or ions. Atoms, molecules और ions. एई जो constituent particles ताको हमें lattice point भी कहू या को हमें lattice point भी कहू. lattice point एई जो lattice point बा constituent particles से एमाने repetitive pattern रे arrangement है कि पूरा whole crystal को generate करते. तो crystal lattice या को हमें definition लिखि परिबा a three-dimensional regular arrangement of crystal lattice. A three-dimensional regular arrangement एटा गोटे रेगुलर अरेंजमेंट कहले होबो. गोटे constituent particles केमिति से रेगुलरली गोटे पैटर्न रे अरेंजमेंट एक थाउची आ गोटे एंटायर जे क्रिस्टल को जनरेट करची ताको हमें कहबा क्रिस्टल लैटिस. ए थ्री डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट which generate a crystal lattice. A 3D three dimensional regular arrangement of lattice point और आपको हमें कहि परिया constituent particles which generate a regular arrangement of a lattice point in all directions which generate space lattice. तो ये होची पिले डेफिनेशंस ऑफ क्रिस्टल लैटिस. बुझले कि नहीं समझते? क्रिस्टल लैटिस मींस ए थ्री डायमेंशनल regular arrangement of lattice point. That lattice point is constituent particles. Okay, that constituent particles may be atoms or molecules or ions in all directions which generate space lattice. ये होची पूरा whole space lattice. आपको हमें कोई प्ले space lattice. Okay, तो
याकू आमे भल से पिक्चराइजेशन करबा जदी देन एमितिया टाइप रो गोटे स्पेस लैटिस हो केमितिया ना ये होची गोटे गोटे स्पेस लैटिस जो स्पेस लैटिस रे आपको हमें तो okay. So these are the lattice point, and lattice points are the constituent particles. These are the lattice point. These lattice points are the constituent particles, and as always, I have already told to you that lattice points may be atoms, molecules, or ions. Then another lattice, crystal lattice, we can be draw like this. Okay. Okay. So these are the lattice point. These are some lattice point, and again we will create this type of okay. So this box this is unit cell. Okay, this is unit cells. So a unit cell, this unit cell, it can be defined as it is the smallest repeating part. It is smallest repeating part. It is the smallest repeating part in unit cell. In unit cell, it is the smallest repeating part of space lattice of space lattice which generate whole crystal, which generate whole crystal. So again I am repeating this, the definition of unit cell, that is it is the smallest repeating part of space lattice which generate whole crystals. It means this is the whole solid crystalline solid. Okay, this crystalline solids having repetitive unit cells. Repetitive means एटी देख पिले रिपीटेटिंग यूनिट सेल्स मींस ए जो गोटे गोटे बॉक्स रही छि भीतर गोटे गोटे बॉक्स अछि से गोटे गोटे बॉक्स को कहउछि यूनिट सेल्स सेमितिया बहुत गुडा बॉक्स जदी लागी थिबे आ रिपीटेटिंग हेग्री जनरेट हेकि गोटे बहुत बड़ बड़ क्रिस्टल को से माने जनरेट करथिबे देन ताको हमें कहबे यूनिट सेल्स. ओके, दैट यूनिट सेल्स मे बी वन बॉक्स. ओके, आई हैव ऑलरेडी गिवन द पिक्चर of your notes. You may see that. Okay,
So unit cells means गोटे particular आमे कोई परिया गोटे box किंबा गोटे cube type रो cube unit cells means one type of a cube that is in repeating mode which generate whole crystal, that is unit cells. So what we have learned from this, that is space lattice. Space lattice means गोटे solid रो पूरा cover पूरा तर space को cover करिया पई ताको कोआ होची space lattice. आउ एथि कोन कोन अछि स्पेस लैटिस ना लैटिस पॉइंट अछि बा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अछि केमिति ना पूरा रेगुलर अरेंजमेंट हेकि अछि ओके और रिपीटेटिंग मोड रे अछि सेही जो स्पेस लैटिस रे बहुत एटा होछि गोटे स्पेस लैटिस गोटे क्रिस्टल ये होछि गोटे क्रिस्टलाइन सॉलिड ये होछि गोटे क्रिस्टलाइन सॉलिड ए क्रिस्टलाइन सॉलिड रे बहुत गोटे रिपीटेटिंग क्यूब अछि बा रिपीटेटिंग बॉक्स अछि से गोटे गोटे बॉक्स को कोहा होछि यूनिट सेल्स. बेस्ट एग्जांपल आई कैन टेक गोटे बिल्डिंग रे तार यूनिट सेल कोडा ब्रिक्स माने इटा होछि गोटे यूनिट सेल्स ओके हमें बायोलॉजी जानि छे सेल्स जनरल बॉडी सेल्स जब तक होछि यूनिट सेल्स ओके ठीक सेमिति बिल्डिंग रे जेमिति गोटे इटा को कोहा होछि यूनिट सेल्स ठीक सेमितिया गोटे क्रिस्टलाइन सॉलिड रे बहुत गुडे लैटिस पॉइंट जा गोटे रेगुलर अरेंजमेंट हेकि थिबे से रेगुलर अरेंजमेंट किमि हेतिबे ना पॉइंट टू पॉइंट लैटिस पॉइंट गोटे लाइन ड्रॉ करके थिबे सेमान को भीतर गोटे रिपीटेटिव मोड रो गोटे स्ट्रक्चर डिटरमाइन होतो सेमि तार रिपीटेटिव ता गोटे होल क्रिस्टल को जनरेट करछि दैट इज यूनिट सेल्स एंड द पूरा होल crystal, the space is known as crystal lattice. Okay, these are the all about space lattice and unit cells. Then move on to that is a parameter of unit cells. What are the parameters? Parameter of unit cells. Later, it is a unit cells. Okay. So these are the sides. Okay, these are the sides. Let it be that is B, it is A, and AB. This is C. Okay. So here, what are the parameters of unit cells? It is a unit cells. It is unit cell. Again, move पुनी repeat करछि पिले. एमिति का बहुत गुडे unit cell को नेकरी गुटे क्रिस्टल लैटिस तयारी हेछि बस स्पेस लैटिस तयारी हेछि बहुत गुडे यूनिट सेल्स बा गोटे यूनिट सेल होछि गोटे क्यूब बा गोटे बॉक्स बहुत गुडे यूनिट सेल को जॉइन करले बा ताको हम रिपीटिंग मोड रखले गोटे क्रिस्टल सॉलिड तयारी होछि टोटल गोटे क्रिस्टल सॉलिड तयारी होछि जेमिति कि बहुत गुडे इटा को हमें जॉइनिंग करले गोटे बिल्डिंग तयारी होछि ठीक सेमितिया बहुत गुडे यूनिट सेल को आमे जॉइन करले गोटे सॉलिड तयारी होछि गोटे क्रिस्टलाइन सॉलिड तयारी होछि ओके सो व्हाट आर द पैरामीटर्स बेसिक पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल्स हमर हेडिंग होछि पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल्स parameters of unit cell. What are the basic parameters of unit cells? Its dimension is characterized by its dimension is characterized by edge length edges A B C ये होची A B C ओके ठीक सेमिति ए जे बी सब A B C ही हो ओके A B C these are the A B C ओके सो ए सब ए जे होची सब एज लेंथ
ओके एज लेंथ समस्त सेम था इक्वल था तो डिफरेंट यूनिट सेल्स रे एज लेंथ सेम था तो कोडी कोडी डिफरेंट था तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पैरामीटर्स डिफरेंट यूनिट सेल्स कैन बी डिराइव्ड but unit cells is a one type of cube which repetitive mode which generate a whole lattice. Okay, then angle between edges alpha beta gamma. Okay, ame jodi a और b याको ame नोबा alpha and b and c आपको ame नोबा beta आपको ame नोबा gamma. So what are the dimension? The dimension is characterized by edges A, B, C. It is the first point. Then second point, angles. Okay, angles. Alpha is in between edges A and B. Similarly, angle beta is in between edges or we can say sides in between B and C. Similarly, angle gamma is in between edges that is C and A. So we can say the basic parameter of unit cell is its edges, that is size. Okay, its size, it may be A, B, C, D, etc. and its angles. The angles means the angle which is formed by the two edges of unit cells. Okay, here I have shown you three edges, that is A, B, C type. Okay, B is that is x axis, A is that is z axis, and C is on y axis. And the angles form alpha in between, that is B and A, beta angle formed in between B and C, gamma angle is formed in between C and A. So these are the two parameters, angles and sides, edge sides. Okay, or we can say axial sides. Axials means that is edge, or we can say sides. Then next one, that is types of unit cells. Types of unit cells. First one, unit cells is categorized into two types: primitive and non-primitive unit cells. Primitive, it has two types. One is primitive, another is non-primitive. One is primitive and non-primitive. What is primitive unit cells? Primitive unit cells means in these unit cells the constituent particles are present only at corners. Primitive unit cell. In primitive unit cells, the constituent particles are present. The constituent particles are present at corner only.
in at corners only. Okay, in at corners only means if we draw the diagram, then it will be like that. Okay, it will be like that. So in a unit cells, in each unit cells, how many number of corners are there? Corners, total 8 corners. So the atoms will be upon corners only. The constituent particles or molecules, the constituent particles is laid upon corners only. That is primitive unit cells. Then again in case of non-primitive unit cells, non-primitive unit cell, or sometimes we can call it a center unit cell. Okay, sometimes we can call it center, that is, or centered unit cell. Okay, means center unit cells means in unit cells the constituent particles are laid on the corners as well as some center, that may be some edge center, maybe face center, maybe body center. Okay, and that type of unit cells are coming under non-primitive unit cells. Nahale ame tako koi pariba center unit cells. Mane jeti सब unit cell रे corner jar रे constituent particles रहिबा सहित सेमान किछि सेंटर रे रहंती, सेमाने फेस सेंटर रे रहि परंती, गोटे पर्टिकुलर फेस रे रहि परिबे, नले बॉडी भितर रहि परिबे, गोटे बॉडी रे सेंटर पोर्शन रे रहि परिबे, ताको अछि सेंटर्ड प्रिमिटिव सेल्स. ताको हम केमति लिखि परिया? डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑक्युपाइड बाय द constituent particles, the centered unit cells are again it is 3 types. Okay, center we can write here depending upon occupying constituent particles, center unit cell is of 3 types. कौन लिखली पिले ना? डिपेंडिंग अपॉन ऑक्युपाइंग ऑफ constituent particles, center unit cell is of 3 types. माने constituent particles मानकर ताकर पोजीशन को डिपेंड करके पूरी center unit cell दा 3 types अछि, 3 types. तो first one it is face center unit cell, face center unit cell. face center unit cell रे आको हमें कौन कहि परियो ना? गोटे face center रे all the atoms, all the constituent particles are at corners as well as at face center, at a face. Okay, all the constituent particles are at corners as well as at each faces. आपका मैं लिख पाएगा at each faces of unit cells. तो ये डायग्राम टा हिपरिबो एमितिया. देखो पहले एटा फेस सेंटर यूनिट सेल केमते होची ना? एटी फर्स्ट कॉर्नर तो रहइबो, ए कॉर्नर तो रहइबो.
कॉर्नर रे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जा रहिबो ही रहिबो ताहा सह सी सब फेस रे रहबो सी सब फेस रहबो एडी गुटे 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 फेस रहबो टॉप फेस एटा गुटे देन एडी गुटे फेस रहबो तो टोटल जेतुटा फेस अछि सी सेतुटा फेस अछि रहबो आ गुटे बैक फेस गुटे बैक रे गुटे रहबो एडी गुटे ओके ओके तो ए सब फेस सब रहबो तो ए फेस सेंटर यूनिट सेल्स कोन किछि अलग अछि एठी जेमिति गोटे प्रिमिटिव यूनिट सेल रे तार कॉर्नर पॉइंट रे एटम जा रुहे ता से जेमिति रुहे सेमिति रहबो ता सहित सी सब फेस जा रे गोटे गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जा रहबो दैट इज फेस सेंटर तो टोटल जेतेटा फेस अछि हमर टोटल केतेटा फेस अछि पिले 6 फेसेस तो 6 फेसेस रे टोटल 6 एटम्स 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहबो तो ये 6 है एपडे 3 एपडे 3 तो टोटल 6 constituent particles will be occupied by the 6 faces of unit cell along with the constituent particles will be at all the corners of unit cells and that kind of unit cells is coming under face center unit cells. Again other type of unit cells are body center unit cells. So I have mentioned 3 types of unit cells. The first one that is face center. This is the first one. Second one that is body center. Body center. Body center unit cell. In this type of unit cells, all the constituent particles, all the constituent particles are at corners as well as at the center of the body as well as at center of the body as well as at a center of the body. तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल रे केमति होबो ना जेते गोटे यूनिट सेल रे तार कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जा सब कॉर्नर रे रहइबो ता सहित गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तार बॉडी सेंटर रे रहइबो या पे डायग्राम ला केमति हेइ परियो पिले या पे गोटे आमे यूनिट सेल्स करिया ओके ये हो गोटे यूनिट सेल्स ओके ए यूनिट सेल रे टोटल जो 8टा कॉर्नर अछि 8टा कॉर्नर रे गोटे गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहइबो ओके 8टा कॉर्नर रे 8टा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहिला ता सहित गोटे सेंटर पोजीशन रे गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहइबो एटा होची कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल गोटे सेंटर पोजीशंस ओके ये होची सेंटर पोजीशन ये होची बॉडी सेंटर यूनिट सेल्स other type of unit cells is that is end center unit cells end center ये होची पहले फर्स्ट सेंटर यूनिट सेल that is face center unit cell ये होची पहले second body center unit cells then third is that is end center unit cell end center unit cell एटा केमितिया एटा कोन ना all the constituent particles are at all the corners
all the corners as well as two end faces, as well as end faces of unit cell, as well as end faces of unit cell, as well as end faces of unit cells. Two end faces of unit cells हम एडी कोई परिबा, तो एडी हम लिख पारे as well as two end faces of unit cells. आपको हम पहले किन देखि परिबा ना, ये होची उठे unit cells, ओके, ये उठे unit cells आर दीटा ऑपोजिट फेस रे तारो रहइबो, एटा होची गुटे ऑपोजिट फेस, एटा होची गुटे ऑपोजिट फेस, आ बाकी ए सब कॉर्नर एटम जा रहिबो, ओके, आ बाकी सब कॉर्नर एटम जा रहिबो, ये होची एंड फेसेस, आ बाकी कॉर्नर एटम. So this is the third type of center unit cells, or you can say third type of non-primitive unit cells. So end center unit cells say all the constituent particles will lie on all the corners of unit cells as well as the two opposite faces, these two faces are opposite to each other. So these two faces are covered by unit cells or occupied by unit cells, okay. So these are some types of primitive, non-primitive unit cells. Now next move on to the Bravais lattice, that is the types of unit cells, okay. See, 7 primitive unit cells ro mu kichi ebe information debi. 7 primitive, that is, we can say in other way, that is Bravais lattice, or the types of, or that is 7 types of primitive unit cells, okay. 7 types of primitive unit cells. So the types of unit cells can be made on the basis of the measurement of their axial angles and axial sides. Axial angles, axial angles है alpha beta gamma को unit cell के same थे, कोड different थे, को angles जरा 90 degree थे, कोडी not 90 माने 90 degree not थे, तो कोडी 120 degree थे, तो कोडी तीनटा जा 90 degree की 120 degree not थे. तो same basis पे हमें different types of unit cells नहीं परिवा, आउटे नहीं परिवा, categorize कर परिवा, सेमानंकरो edge length, सेमानंकरो जो edge length, that is sides A B C. को केस रे A B C side same थे, को unit cell से A B C side same not थे. तो on the basis of measurement of edge lengths and edge angles, that is axial angles, alpha, beta, gamma, the different types of unit cells are recovered. The basic 7 primitive unit cells are as follows. That is here, that it is types, okay. It is axial sides, then it is axial angles, okay. Axial sides, axial angles. The first one, that is cubic, the first one, serial number, okay. Cubic, okay. Second one, tetragonal.
third one orthorhombic. Third one is orthorhombic. Fourth one, that is monoclinic. Okay. Fifth one, triclinic. Sixth one, that is hexagonal. Seventh one, that is rhombohedral. So these are the basic types of primitive unit cells. Okay, basic types of primitive unit cells. Okay. This is basic types of unit cells. So in cubic type of unit cells, here the axial sides, that is A is equal to B is equal to C, and the axial angles is alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degrees. Okay. So here axial sides are alpha, axial sides are A is equal to B is equal to C. माने A type रो माने cubic unit cell रे सेमानकर साइड तीनटा जा सेम थाए, सेमानकर एंगल जा तीनटा जा एंगल अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री थाए. नेक्स्ट टेट्रागोनल केस कौन थाए? नाउ A is equal to B but B is not equal to C. Okay. AD alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degree. Once again, AD पुनी alpha is equal to beta is equal to gamma is 90 degree. सेमितिया orthorhombic रे A is not equal to B, B is not equal to C, and here alpha is equal to beta, beta is equal to gamma is equal to 90 degree थाए. But A केस monoclinic रे कौन था axial side जा इटा same not था. A is not equal to B is not equal to C. AD alpha is equal to gamma is equal to 90 degree. Okay, alpha is equal to gamma is 90 degree, but beta is not equal to 90 degree. है ना? ठीक से मिलता है. Triclinic रे B सीमित है. A is not equal to B is not equal to C. है ना? But A केस रे now alpha is equal to beta is not equal to gamma is not equal to 90 degree. Okay, alpha is equal to beta is not equal to gamma is not equal to 90 degree. 80 A is equal to B is not equal to C, but 80 alpha is equal to beta is equal to 90 degree, but gamma is equal to 120 degree. Gamma is equal to 120 degree. And in rhombohedral A is equal to B, okay, is equal to C. Here all the three sides are equal. All the three edge lengths are equal, but in axial angles it will be alpha is equal to beta is equal to gamma is not equal to 90 degree. Okay, so here in cubic type unit cells, it will give three types of unit cells. That is primitive types of primitive cells, types of unit cells. Okay, it will give three types. What are those? That is primitive, then FCC and BCC. Okay, the next one,
Here, in case of tetragonal, it will give two types. That is primitive, and BCC. Only two types. So here, that is 3, or here it is 2. Okay. Total 3 types of cubic unit cells can be seen. One is primitive, next to that is FCC face center cube and BCC body center cube. ठीक सेमितिया टेट्रागोनल रे केते टाइप रे देखाए गोटे प्रिमिटिव गोटे बीसीसी टोटल देटा. ओके. देन ऑर्थोरोम्बिक केस रे ये टोटल 4टा टाइप रो देखाए. टोटल 4टा टाइप. तो 4टा टाइप केमितिया ना गोटे होची प्रिमिटिव, गोटे होची दैट इज बीसीसी, आउट होची एफसीसी, आउट होची that is end center. Total 4टा. ओके. ठीक सेमितिया मोनोक्लिनिक भी दिले देखि गोटे होची प्रिमिटिव, गोटे होची प्रिमिटिव, आउट होची गोटे होची प्रिमिटिव, आउट होची एंड सेंटर. ओके. एंड सेंटर तो टोटल इडी दीटा. आउ बाकी तीनटा रे गोटे लाखे देखाए. दैट इज प्रिमिटिव सेल. प्रिमिटिव यूज की प्रिमिटिव, दैट इज गोटे यूज प्रिमिटिव सेल गोटे. ये भी ठीक सेमितिया प्रिमिटिव. Primitive unit cell, that is what. तो total 14 टाइप के unit cells देखा है ना. 3 to 5, 5 4, 9 to 11, 11 3, 14. So total 14 types of primitive unit cells can be find out, and that is known as Bravais lattice. So what are the different structures of 14 types of primitive unit cells? The diagrams you can find from your textbook. Okay, I have already written on your notes. Okay, which I have provided to you, so you can find out. Okay, so these are the all different types of unit cells, and it is categorized by on the basis of their different edge lengths and different edge angles. Okay, or we can say axial angles. The next move on to that is number of atoms per unit cell. Can I rough it? समस्ते बुझिलो पिले देखो मु आगु कहउतली यूनिट सेल्स मींस गोटे होल क्रिस्टल सॉलिड रे जो पर्टिकुलर गोटे क्यूटा रिपीट हेकरी बहुत गुडे नंबर्स रे रिपीट हेकरी गोटे होल क्रिस्टल दे ताको कुआ जे यूनिट सेल्स. आ यूनिट सेल रो बेसिक पैरामीटर होच तार एड्ज, तार साइड्स ए बी सी टाइप तीनटा साइड अछि, आ तार तीनटा डिफरेंट एंगल्स अल्फा बीटा गामा. से अल्फा बीटा गामा और ए बी सी ए जो मेजरमेंट को नेकरी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स हे परछि. तो टोटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स केतरा हे परछि ना 14 यूनिट सेल. से 14 यूनिट सेल्स कोन कोस पिले Bravais lattice. So at present 7 types of primitive unit cells, and all total of primitive unit cells will be 14, and that 14 types of unit cells is known as Bravais lattice. And all the 14 types of unit cells diagram you can find from your notes, okay, which I have provided to you people, and in books also. Okay, so that is not important for exam point of view. Okay, that is not important, means that diagram is not so important, but important is that you have to remember these tables. Sometimes it may ask in your exam, so sometimes it is asking on your board exam. That's why I am telling to you, remember these tables. Okay, so next, the number of atoms present in types of unit cells. Okay,
C. Number of atoms per unit cell in cubic lattice. Unit cell in cubic lattice. In cubic lattices. Cubic lattices. Okay. Number of atoms present in unit cell in cubic lattices. The total 14 types of cubic lattices are there. That is known as Bravais lattice. So generally 3 types of unit cells we can configure or we can consider. That is a simple unit cells where the atoms are only present at corners. Okay. Then face center माने एटम जा किबा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जा सेमानकर कॉर्नर रे थांदी ता सहित सेमानकर टोटल 6 टा फेस रे एटम जा थांदी बा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जा थांदी ठीक सेमते बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल और यूनिट सेल्स बॉडी सेंटर रे सब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जा सेमानकर 8 टा कॉर्नर रे थांदी ता सहित गुटे बॉडी रो सेंटर पार्ट रे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थाए तो एबे देखिबा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फर्स्ट वन दैट इज simple or primitive unit cells. First one simple or primitive unit cell. Simple or primitive unit cells. तो एटी हमें कौन कोई परिवार ना all the constituent particles are present only at all corners of unit cell. Okay. तो and each corner occupies 1/8 part of atom. 1/8 part of an atom. एटी बढ़िया पिले गोटे जिंस हमें जाने को पाइबा गोटे सिंपल यूनिट सेल टारे गोटे सिंपल यूनिट सेल हैला गोटे प्रिमिटिव यूनिट सेल रे तार केतेटा कलर अछि ना टोटल 8टा कलर थाए ओके टोटल 8टा कलर थाए ओके आ गोटे कलर 1/8 पार्ट ये होची 1/8 पार्ट means 1/8 part of atom हैला तो टोटल number of atoms per primitive unit cell is per primitive unit cell is तो टोटल केतोटा कलर्स अछि 80 गोटे दीटा तीनटा ओके चारटा पांचटा छोटा डौची 1/8 पार्ट ओके तो पिले टोटल 8टा कलर सो 1/8 of atoms into 8 corners is equal to एटा 8 कैंसिल हो जीवो 8 कैंसिल हो गला तो is equal to 1 atom per primitive cell
or primitive unit cell ये बुझिया पे चेष्टा कर पिले हमर जो सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल अछि तार टोटल 8 टा कलर अछि गोटे गोटे कलर रे 1/8 पार्ट ऑफ एटम रहला माने 8 भागरु भागे गोटे कलर रहला तो 8 टा कलर रे केते रहबो 1/8 ऑफ atoms into 8 color is equal to 1 atom per primitive unit cells. Okay, the next one, that is for body center unit cell. Okay, body center unit cell, body center unit cell. Eighth one होची all the constituent particles okay are present at all the corners as well as all the corners as well as at the center of body, at the center of body. तो पहले यार डायग्राम टा केमिति हबो देखो ये होची गोटे यूनिट सेल्स आपको हमें बॉडी सेंटर नबा बनेबा ओके जिमिति 8 थिला जो एटम जे अछि 1/8 पार्ट सेमिति रहइबो ता सहित गोटे बॉडी रे रहइबो ओके एडी टिके हमें गान पके दबा ओके एडी ठीक सेमिति आपिले जे 80 total number of atoms per unit cell is equal to total 8 colors. Okay, total 8 colors, so is equal to आपका मैं लिखूंगा okay is equal to 1/8 atom into 8 corners plus at 1 atom at the body, 1 atom at body center तो टोटल कितना हैला 1/8 part of atom into 8 color plus 1 atoms at the body center, it will be 2 atoms per unit cell तो बॉडी सेंटर रे केतेटा एटम्स होइबो दीटा मु केमिति हैला पुनी आथरे बुझौची देखो बॉडी सेंटर रे 8 जहा एटा ताहा सेम डिफरेंस होची 8 केवल गोटे बॉडी भीतर बॉडी रो गोटे सेंटर पार्ट रे गोटे एटम्स पूरा एटम ते गोटे अछि एटी कोन होतला ना एटी केवल 8 टा कॉर्नर रे एटम जा थिला सेले कोनी 1/8 पार्ट ऑफ एटम माने 8 भागरु भागे एटम गोटे कॉर्नर थिला तो टोटल 8 टा कॉर्नर केते एटम रहइबो ना 8 कॉर्नर into 1/8 पार्ट ऑफ एटम इज इक्वल टू 1 एटम पर यूनिट सेल गोटे होल यूनिट सेल रे गोटे एटम रहइबो ठीक सेमितिया बॉडी सेंटर यूनिट सेल रे गोटे एटम जो 8 टा कॉर्नर रे 1/8 पार्ट रोजी that is 1 atom plus गोटे बॉडी भीतर अछि 1 plus 1 that is 2 atoms per unit cell. Then next one, that is face center unit cell.
phase center unit cell. Okay, all the atoms are present. All the atoms are present. All the atoms are present at all the corners. All the corners. All the atoms are present at all the corners, as well as all the faces. Out 80 each phase of unit cell contribute half of the atoms. Or each atom contribute two phases of two different unit cells, of two different unit cell. 80 केमिति हबो ना ये होची unit cell, ओके 80 आठड़ा कलर अछि, आ गोटे फेस अछि, सब जे 6टा फेस अछि से 6टा फेस रु केवल गोटे लाखे एटम जो ऑक्युपाई करछि, 6टा फेस से 6टा एटम ऑक्युपाई करछि, बट गोटे एटम रे हाफ लाखे सी ऑक्युपाई करछि, एथि गोटे भी हाफ, ओके आ गोटे भी हाफ, जरा कि मैं देखै पानी, एथि गोटे भी हाफ अछि हला। तो केतेटा हला, गोटे 2टा 3टा 4टा 5टा 6टा, तो 8 केमति हबो ना 1/8 part of atom into 8 corners into half of 6 faces is equal to total कितने ला, total 4 atoms, total 4 atoms per unit cell. देखो पहले तो फेस सेंट्रल यूनिट सेल रे टोटल 4टा एटम्स रही पारिबो, केमिति ना जेतिकी सब कॉर्नर अछि, टोटल 8टा कॉर्नर अछि, 8टा कॉर्नर रे 1/8 पार्ट ऑफ गोटे एटम, तो एमि देखिया को 8 8 जा कैंसिल आउट टू ईच अदर, माने 1 एटम्स प्लस 6टा फेस अछि, गोटे फेस रे आधा एटम अछि, तो 6टा फेस केते एटम रहबे, 3टा एटम, 3टा प्लस गोटे 4टा एटम्स पर यूनिट सेल रहबो, तो फेस सेंटर यूनिट सेल रे टोटल 4टा एटम्स रही पाइबो. So these are the all about number of atoms present in different types of unit cells. Okay, now move on to the radius of an atoms in a unit cells. The radius of an atom. Okay students, up to this much what
I covered here. So you need to prepare very well and go through details on the notebook as well as NCERT book and Kalyani publication book. Because NCERT bohi au Kalyani publication book ta बहुत बढ़िया देची से ता सहित तुम नोट्स टा जो नोट्स टा तुमको प्रोवाइड कराई जे से नोट्स रू देखिबो जहाँ जहाँ मु पढ़ेली से सब भल से बुझिबो जहाँ भी डाउट अछि मते पचारिबो ओके आमे नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करबा ना द रेडियस ऑफ एटम्स ऑफ ईच unit cells. What are the types of unit cells? Basically at a total 14 types of unit cells are there, which is known as Bravais lattice. किंतु आमे face center cubic cell, body center cubic cell and simple unit cubic cell जोड़ा कि primitive unit cell ए तीनटा टाइप unit cell रा हमें रेडियस बाहर करबा गोटे गोटे एटम रे रेडियस केमती बाहर करबा सेटा हमें नेक्स्ट क्लास रे पढिबा ओके सो फॉर दिस लेक्चर दिस मच ओनली ओके I hope you will go through with details. Whatever you have doubt, if you found, then you may ask me. Okay.